Hello dear students, welcome back to English grammar classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is interrogative sentences. So बच्चों, we have to read the following sentence. Who is your best friend? Is he writing a letter? So बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पे इन sentences को ध्यान से देखो तो ये दोनों ही sentences हमसे question पूछ रहे हैं. These sentences are questions और interrogative sentences. So बच्चों, ऐसे sentences जो कि questions पूछते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? Interrogative sentences. Interrogative sentences are those that ask questions and have a question mark at the end. So बच्चों, interrogative sentences कैसे होते हैं? जो कि question पूछते हैं and उनके end में question mark होता है. And interrogative sentences always ask a question, begins with the capital letter and ends with the question mark. So बच्चों, कोई भी interrogative sentence जो है वो हमसे कुछ question पूछेगा, start होगा capital letter से and end होगा question mark से. There are two kind of interrogative sentences, WH questions and yes or no questions. So बच्चों, interrogative sentences दो तरीके के होते हैं, WH questions and yes or no questions. So let's start with WH questions first. Words like what, when, where, who, whose, whom, why, which, how, etc. are used to ask these types of questions. अब बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो WH क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सब की स्टार्टिंग में WH प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाउ. तो बच्चों, यहाँ पे हर जगह स्टार्टिंग में WH है एक्सेप्ट दी हाउ. So these sentences make inquiries और ask question. बच्चों, ये sentences क्या करते हैं? ये inquiries पूछते हैं या फिर questions पूछते हैं. WH type of questions cannot be answered in simple yes or no. So बच्चों, हम लोग WH questions को answer करने के लिए yes or no use नहीं कर सकते. For example, what is your name? So बच्चों, it has WH in the starting, so इसका मतलब ये WH question है and हम इसका answer yes or no से नहीं कर सकते. How old are you? So बच्चों, इसका भी आंसर हम लोग yes or no से नहीं कर सकते. Who is your best friend? So बच्चों, ये भी WH से स्टार्ट हो रहा है and इसका आंसर हम लोग yes or no से नहीं कर सकते. Now let's move towards the yes or no questions. Yes or no questions are questions that can be answered in yes or no. So बच्चों, yes or no questions कैसे questions होते हैं जिनका आंसर हम लोग yes और no से कर सकते हैं. Words like is, am, words like is, am, are, has, have, had, can, could, would, may, do, does, did, etc. are used to ask these types of questions. ठीक है बच्चों, these sentences ask questions that can be answered in yes or no. बच्चों, इन sentences में जो questions पूछे जाते हैं उनका आंसर हम लोग yes or no में कर सकते हैं. For example, have you finished your breakfast? We can answer it by answering yes or no. Is your mother in the kitchen? यहाँ पे भी बच्चों हम लोग yes और no में आंसर कर सकते हैं. Are you Mr. Bhalla's daughter? So बच्चों, इसका आंसर भी हम लोग yes और no में कर सकते हैं. Can you bring a glass of water? So बच्चों, इसका भी आंसर yes और no में हो सकता है. Now let's quickly revise. Sentences that ask questions उनको हम क्या बोलते हैं? Interrogative sentences. There are two kinds of interrogative sentences, right? WH questions and yes or no questions. What, were, when, which, who, why, how are WH questions. So बच्चों, I hope आप सबको ये chapter समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.